He was very passionate. He knew what he wants. My rank was 7,000 in JEE Mains. That was the first time I realized how underexposed I am. I didn't had idea कि IIT भी कई सारे होते हैं अच्छा। और इंजीनियरिंग भी कई सारे सब्जेक्ट्स में होती है। मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप साउंडेड मोस्ट फैसिनेटिंग टू मी, ऑल्सो बिकॉज वी हैड एलुमनाइज लाइक मुकेश अंबानी। बाय सेकेंड सेमेस्टर वाज क्लियर कि इंजीनियर तो बनना नहीं है, तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। दैट्स वेरी गुड हैक यार। नॉर्मली लोग सोचेंगे यार मेरे पास आइडिया ही नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। बिकॉज माई पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट मी, बिकॉज ये वाले कि अच्छे कॉलेज में हो गया है, यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जॉब करेगा। बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड, सो इवन आफ्टर मेकिंग मनी आई डिडंट नो हाउ टू स्पेंड। अब उसमें मार्जिन कुछ बन नहीं रहा था, डिलीवरी भी खुद ही करने जा रहे थे स्कूटी पे। वैसे कर करके मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहे, फेल होते रहे। बहुत बढ़िया बात है। इनके साथ एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए कि यार there will be bunch of energetic people. Since customer is the king and if they want red you can't serve blue, so it doesn't make sense to be creative in problems. Problems should come from the market. Solutions में आप creativity explore करें अपनी। अभी we have 100+ customers. Okay. We did last month 45 lakhs of revenue with them. Students क्या एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो कैसे फिगर आउट करना चाहिए कि इज दिस अ पाथ फॉर मी। You know yourself the best. आपको खुद से झूठ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। You can talk to yourself without filters. Why do you want to become an entrepreneur? For me the answer was very clear. I want freedom. कुछ गलतियाँ तो कर देनी चाहिए क्योंकि बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते गलती करना। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ कैंपस टू सीईओ। आज मेरे साथ एक ऐसा लड़का है जिसको मैं पिछले 5 सालों से जानता हूँ, एक छोटे से शहर हल्द्वानी से, एंड ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर लास्ट 5 years। जब वो कॉलेज में था, कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर में था, मुंबई से पढ़ाई कर रहा था बट कभी मुंबई में नहीं रहा। ही वॉज वेरी पैशनेट, ही न्यू वट ही वॉन्ट्स। ही स्टार्टेड अ कंपनी नोन एज सेरी। सेरी को आज 4 साल हो गए हैं, ठीक है। ये B2B मार्केटिंग की एक कंपनी है जहां पे ही हैज़ नॉट बीन एबल टू ओनली क्रिएट अ प्रोडक्ट, मोनिटाइज द प्रोडक्ट, scale the product, and more importantly get the outside validation in terms of raising the professional funding. That is what Saad has been done. I am very proud of what Saad has built. Today we have Saad, welcome to this episode. 5 साल हो गए, आई थिंक 5-5.5 साल हो गए हमें बात करते हुए। लेट्स स्टार्ट। ये जर्नी कैसी रही है अभी तक की? कॉलेज की जर्नी कैसी थी? कहाँ से हो? पढ़ाई क्या की? जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई की उसी में कंटिन्यू क्यों नहीं किया, उसके बारे में बात करते हैं। Cool. So around 11th-12th I prepared for JEE. That was the first time in my life when I learned hard work, discipline, सारी चीज़ें। उसके बाद when it came to choosing colleges, that was the first time I realized how underexposed I am, because coming from a small town I didn't had idea कि IIT भी कई सारे होते हैं और इंजीनियरिंग भी कई सारे सब्जेक्ट्स में होती है। तो आई शुड हैव चोजन कंप्यूटर साइंस एज पर लॉट ऑफ पीपल, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड टू डू सो बिकॉज आई वॉज लाइक मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। सो आई वेंट विथ केमिकल इंजीनियरिंग, गेसिंग दैट। तो तुम ये कह रहे हो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ तुम्हें, कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन था और तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते थे? हाँ, माई रैंक वॉज 7,000 इन JEE मेन्स। वाओ। I could have got CSA in apart from top 4-5 in any of the NITs or any of the triple ITs. But I had no idea that I can do computer science engineering. I was like, I didn't had computer science in 11th-12th, so I was like it would be very hard for me. I don't know coding, so let's go with what I know. So I knew physics, chemistry, maths. I liked all these subjects. But आगे पीछे कम्युनिटी में भाई बहन दोस्त सीनियर्स, वो सपोर्ट सिस्टम, या छोटे शहर से थे इसलिए पता नहीं था क्या हो रहा है, एक्सपोजर की कमी थी? हाँ, it was there was no exposure. There was no one in my family who was able to guide me. We had a very far-fetched cousin. She was pursuing her master's in US and she also was a chemical engineer. So looking at her, I was also like, this looks like something cool. If you pursue this, you can go to US, and when you do PhD, you also make money. So that was also fascinating for me कि पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं तो अच्छी चीज़ है। So that was the basic idea. When I actually came to Mumbai, I realized there are far more professions which you could have thought of, which nobody even asked me कितना कर सकते हैं। So the first thing I realized was, if I am as talented and as smart as everybody thinks I am, and I'm making my career decisions based on the limited information I have,
I would be missing out on a lot of opportunities. So my first thought was, how can I get as much exposure as I can for myself before settling on a career? Because so far I would have understood that if you are smart and hardworking, you can crack whatever Fair. you want to do. Yeah. So then my college also played a very key role. So within first year, within first month, they conducted orientation sessions where alumni from all walks of life used to come and share their life experiences. So we had IS officers, entrepreneurs, scientists, senior engineers, everybody coming and explaining, sharing their life stories, how it's going, how's their journey. So few things I realized, I didn't want to be a chemical engineer, posted somewhere far from the city, no social life, no family life. It sounded like a very bad life. So I was like, why to work hard for it? Scientists also didn't seem very likely to me. Inspirational. Hmm. I wanted to work on some innovations, but scientists sound very boring life to me. You are in a lab talking with only 4 or 5 people, meeting them every day. I was more of a social person, so I was like, इसमें मज़ा तो नहीं आएगा, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे. Entrepreneurship sounded most fascinating to me. Also because we had alumni like Mukesh Ambani, founders and chairman of Asian Paints, Pidilite, Dr. Reddy Labs, and a lot of stories floating around the campus. And these were your alumnus? Yes. एंड इनमें से कितने बड़े बड़े लोगों से कॉलेज के 4 साल में तुम्हें 4 में से 2 साल तो शायद कोविड में ही निकले मिलने का या सुनने का मौका मिला? Only a few of them. Convocation ceremonies पे या फिर इंस्टीट्यूशन डे होता है उसमें they would sometimes come, but बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन किसी से नहीं रहा. So आए और उनको सुना चले गए. So that was very inspiring. So my first thought was कि all of these used to sit on the same benches, eat samosa in the same canteen. If they can build such great empires in their times when there was no internet, no access to capital, no access to those clingy networks, license Raj. So if I'm not able to do that, it's totally on me. It's not कि वो कर सकते थे तो मैं नहीं कर सकता. So I was like, if this is possible, let's give it a shot. Anyways, hard work तो करना ही है. SSC क्लियर करने के लिए भी करना था, इंजीनियर बनने के लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है. So let's give it a shot. तो वहाँ से फिर I started figuring out how to become an entrepreneur. So it was a more of a very thoughtful approach. Very good. Rather than accidental. हाँ. So उसके बाद से I was like कि क्योंकि कॉलेज में ऐसा कल्चर नहीं था, तो I was like कि it's okay, I'm in Mumbai. So anywhere in Mumbai where there was an e-summit, any college organizing startup summit, anything related with these words, I would just go and attend. So first semester I was focused on academics. By second semester I was clear कि इंजीनियर तो बनना नहीं है तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके. So I started attending all these kinds of summits, meeting with people, entrepreneurs, attending pitching competitions with random business ideas whatsoever, just trying to convince anyone to just let me in their office because I wanted to know कि बनता कैसे business, होता क्या startup, because I didn't even वेरी गुड है. दैट्स वेरी गुड हैक यार. नॉर्मली लोग सोचेंगे यार मेरे पास आइडिया ही नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूं. वेरी इनोवेटिव. या गो ऑन. So I was from a background where I only knew that selling price minus cost price is equal to gross profit. इसके अलावा I had little or no understanding of how businesses commerce work. So another thought was कि if I want to become CEO of a business, I would need to learn everything: finance, legal, marketing, sales, or I have no understanding of this. So what I figured out कि whatever they teach in the best MBA schools, I have that education. So I studied their curriculum. I was like, I still have like 3.5 or 3 years left for me. MBA में सब 2 साल में पढ़ाते हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है. जो स्मार्ट बच्चे होते होंगे वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ते होंगे, तो मुश्किल से 2 महीने का सारा करिकुलम होगा. So let me start reading those books. So from there onwards I started reading books and lecture series online from Stanford, MIT वगैरह, just to get a better understanding of how all of these things operate and how should I start thinking. तो वहाँ से फिर I was at a level where my theoretical knowledge could match anyone who has done an MBA from a good school, but again no practical insights. So I started freelancing. Freelancing was for 2 reasons. First, my parents were absolutely against me because they were like अच्छे कॉलेज में हो गया है, यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जॉब करेगा. फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस करता है? सर्विस बैकग्राउंड से हैं सारे? हाँ, जॉब भी सिर्फ पापा की है. पापा से पहले माय ग्रैंडफादर ही वाज अ हेल्पर इन अ लोकल क्लोथ शॉप. अच्छा. और माय ग्रैंडमदर, माय दादी, वो कपड़े वगैरह सिलती थी लोगों के लिए वैसे. अच्छा. तो अच्छा. उतना वेरी अच्छा हम्बल background नहीं बैकग्राउंड्स. था. हाँ. हाँ. तो पापा वाज द फर्स्ट वन जिनकी एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब थी.
तो उन्हीं को थोड़ा बहुत आइडिया था, एक्सपोजर था, जब से उन्होंने इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए पुश किया था। अदरवाइज आई वाज वेरी क्लूलेस कि क्यों अलग से ट्यूशन लगा रहे हैं। तो वहाँ से फिर दे वर वेरी अगेंस्ट मी कि क्या फालतू चीज़ें कर रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि बचपन से बहुत फ्रीडम मिला था। आई वॉज ऑलवेज गुड इन अकेडमिक्स, सो नोबडी क्वेश्चन कि वाई एम प्लेइंग सो मच क्रिकेट और व्हाटसोएवर। दिस वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर टू कॉम्प्रिहेंड कि अभी इनको अचानक से क्या हो गया। फिर आई रियलाइज कि अभी लाइफ का पैरामीटर चेंज हो गया है। अभी तक बचपन में अकेडमिक्स में स्कोर चल रहा था, अभी इनका कंसर्न है कि पैसे कहाँ से आएंगे। सो मेट्रिक चेंज हो गया है, अभी नॉर्थ स्टार चेंज हो गया है। सो लाइक इफ आई कैन प्रूव देम दैट आई कैन मेक इनफ मनी without being an engineer, then it might work out for me. So I thought, okay, let's start freelancing. So I had no idea what I would do, but I just thought, okay, let me start showing up and asking people whatever they want, and I'll try to do it. So there are a lot of people in Mumbai who might recall me as the guy who designs logo or who can get you printed t-shirts. So I was in a lot of entrepreneurship groups. Anybody post request for anything, I'm looking for a graphic designer, like, yeah, I can do, can I help you? Whereas I started to pick up things. Then I met an American entrepreneur, David Wegstaff. So that guy, we had a conversation. He's like, I really like you, you're smart, but I don't know what to do with you. Because I was in first year, first semester, no certifications, no skills, nothing. He said, but you seem smart, so let's work for a week. I'll assign you some tasks. If it works out, it works out. I'll pay you $5 per hour. If it doesn't, then it's okay. So I was like, ठीक है, try करते हैं. So he gave me first task for keyword research for SEO. So for me, the first task was to understand कि होता क्या है ये. सो इट टुक मी लाइक 3-4 days, क्योंकि कॉलेज भी पूरा अटेंड करना था। और बाय द टाइम आई कुड फिगर आउट कैसे करना है, स्टार्टेड डिलीवरिंग। ही वाज लाइक, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, आई हैव असाइन्ड समवन एल्स टू डू, यू डू दिस कंटिन्यूड फॉर 3 to 4 months, and every month I was like, this is my last month because I'm not doing anything. But he still for some reason hanged on with me, and after 3-4 months I ran an Facebook advertisements campaign for him. It went well. Then I started product management for him, more of project management, but they called it product management. So he used to invite a lot of entrepreneurs. They had a webinar conversion funnel, which a lot of edtechs in India also follow. कि first you invite students for webinar. So उनके webinars के लिए used to coordinate with guests, set up webinars on Zoom वगैरह, webinars की marketing, उसके बाद उन लोगों को convert करके sales funnels, वो सब was my part. So I did that for 2 years, met a lot of global entrepreneurs. उनके साथ conversations हो रहे थे, काफ़ी inspiring and landing लगता था कि great people and I'm getting access to them so easily. I started working with Indian companies as well as a freelancer. Meanwhile, I also got the Rising Talent batch by Upwork, because all of these was on Upwork. So Upwork for some reason thought I'm doing something nice. So they gave that Rising Talent batch. It was very new back then. New to introduce program. So I got lucky there as well. उसके बाद फिर I was like, whenever I got some savings, because I had minimal expenses, because coming from a humble background, you don't know how to spend. So even after making money, I didn't know how to spend. So it was all going to savings. So as soon as I got my first 10,000 savings, I built an e-commerce website. वाह। I thought कि और तुमने कुछ खरीदा नहीं अपने लिए? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब होता है, हम्बल बैकग्राउंड से भी आए हो, बहुत बारी ऐसा भी होगा कि जो चाहते थे खरीदना लेना, स्मार्ट वॉच, आईफोन, वो खरीद सकते थे, EMI चढ़ा सकते थे। वो थॉट्स ही नहीं थे कभी कि आईफोन खरीद सकते हैं। मतलब growing up, I didn't even knew till I was in college that when I first saw the board of Sacred Games, Saif Ali Khan, I thought it was a video game. I didn't even know that Netflix existed or iPhones. मतलब nobody in my surroundings had those things. So I didn't even know that I had to aspire these things. Fair. उतना वो brand exposure ही नहीं था so that I could be a Apple loyalist or something. तो I only knew that I want to do a startup. So थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. So 10,000 रुपये से ई-कॉमर्स का वेबसाइट किया, वेबसाइट बनाना सीख लिया था, तो वो तो फ्री में हो गया. किस चीज़ का ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू किया? फैशन एंड अपैरल. अच्छा. बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड हु वाज वेरी मच इनटू फैशन. आई वाज लाइक, इसको कपड़ों का आइडिया है, वेबसाइट बना लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे. सो वी स्टार्टेड. 10,000 रुपये के हम लोगों ने कपड़े मंगाए. अब उसमें मार्जिन कुछ बन नहीं रहा था, डिलीवरी भी खुद ही करने जा रहे थे स्कूटी पे. और फिर उसके और ये बॉम्बे में ही था? ये इट वाज बैक इन माय होम टाउन. अच्छा, ओके. ड्यूरिंग माय समर वेकेशन. ओके. कॉलेज टाइम में तो बहुत हार्ड हो जा रहा था. हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट इट डिडंट वर्कड आउट. एक हम लोगों ने वॉचेस का सेट मंगाया था, उन लोगों ने फिर हमें ख़राब वॉचेस दे दिए, फिर ऑर्डर रिटर्न नहीं किया, तो वो हमारा वर्कआउट नहीं किया, सारे पैसे चले गए. फिर दोबारा से पैसे कटे हुए. फिर आई वाज लाइक, ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं. तो ऐसे कर करके मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहे, फेल होते रहे. फिर वो जो एडटेक स्टार्टअप था जिसकी आपसे बात की थी, हाँ. उस पर काम करना स्टार्ट किया.
उसमें बहुत सारी चीज़ सीखी। फर्स्ट टाइम वर्किंग विद इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिगरिंग आउट एपीआईज़ क्या होते हैं, सारी चीज़ें। प्रोडक्ट भी बन गया, फंडिंग भी आ गई थी, बट बाय दैट टाइम वी वर लाइक हिटिंग द मार्केट्स एंड थिंग्स वर जस्ट स्टार्टेड टू लुक गुड. COVID was like getting over, and then I had another key insight after talking to principals कि शुरू में तो all of these principals whom we spoke for customer discovery, market research, they were very keen and visionary about technology कि how technology and education will go together. बट बाद में पैसा नहीं दे रहा है. बाद में they were like नहीं फिजिकली बेटर है. सो आई रियलाइज कि एजुकेशन दो तरह से लर्न कर सकते हैं, करिकुलम बेस्ड और क्यूरोसिटी लेड. तो अगर हम करिकुलम बेस्ड में जाते हैं तो अगर आप बेस्ट पैरामीटर्स भी लेते हैं, बेस्ट प्रोफेसर्स, कंफर्ट ऑफ योर होम वेर एवर यू आर, सब्जेक्ट्स यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड पैशनेट अबाउट, और द बेस्ट करिकुलम्स, देन यू गेट टू समथिंग लाइक एडिक्स, कोर्सेरा. इनका ही कंप्लीशन रेट 10% से कम रहता है. Fair. So how can I expect students in a school who are not interested in learning, teacher who may not be adequately qualified or interested to teach, to engage these students using whatever technology I'm providing? It's not a technology problem, it's an incentive problem. Technology can only enable them to teach, but it can't make them learn or make her teach. Fair. Yeah. So technology won't bridge this gap. So Yeah. whatever we built was just a temporary boost due to COVID. It has no future whatsoever. So that was very hard closure to accept, because I felt like con man or something कि I told everybody कि it would work out, और टीम सबको इंस्पायर वगैरह करा, इन्वेस्टर्स आ गए, सबको कन्विंस करा, अभी सबको बताना पड़ेगा कि वर्कआउट नहीं कर रहा है. सो दैट वाज वन ऑफ द डिप्रेसिंग फेजेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतना क्लोजली फेलियर इतना पर्सनली फील नहीं किया था, वो भी इतना पब्लिकली. सो दैट वाज अ हार्ड टाइम. फिर इन्वेस्टर को कन्विंस किया, उनको बताया कि ये इंसाइट्स हैं, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, या तो पाइवट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टू पाइवट टू, आई हैव नो एक्सपीरियंस आइडिया ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री. कंटिन्यू कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट, और शट डाउन कर सकते हैं. तो सेट कि ठीक है शट डाउन करते हैं. सेट ठीक है, आई रिटर्न मनी. नो यू कैन कीप इट विथ यू फॉर नाउ, और आई नो यूल फिगर आउट समथिंग एल्स. तो जब कुछ फिगर आउट कर लो दूसरा, उसमें एज प्री सीड यूज़ कर लेना. And who were these investors? This investor was a mentor of mine. So we met him via a college program. So in my college, we had this dean called Dr. Padma Devarajan. So she was like a motherly figure to me. So she actually enabled me to skip all of these classes and being late to assignments, because she used to talk to professors कि मतलब you can give him more leeway, because ऐसा कुछ नहीं कर रहा है है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, वो अपना अलग कुछ स्टार्टअप वगैरह कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है वो. तो उनकी वजह से आई वॉज एबल टू Fair. बंक क्लासेस, मिस असाइनमेंट डेडलाइंस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो उन्होंने उनीथन सर से कनेक्ट कराया था. उनीथन सर इज़ अ मलेशियन इंडस्ट्रियलिस्ट, हार्वर्ड एलुमनाई हैं वो, हमारे कॉलेज के भी एलुमनाई थे, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट. तो ही वॉज लाइक mentoring me, coaching along every step. He's still a mentor and investor in a current business as well. So when I was first looking for funding, I told him कि now I think कि we should raise for funds, because I don't have any money to spend on building the products further. So he asked me कि कितना पैसा चाहिए. So I had a vague idea. Basis whatever I was reading in the news, I said 2 crore. He's like नहीं कम बताओ. फिर he asked me to prepare a financial model. So I prepared a financial model and went back with 1 CR. He said no, you can reduce it further. Then I went with 56 lakhs or something. I was like ठीक है, इतना चाहिए तब तो मैं ही कर देता हूँ. ठीक है, I'm getting lucky here. तो फिर उन्होंने वैसे इन्वेस्ट किया था. Wow. So let's talk about your current business, Seri. इसका insight क्या था? आइडिया कहाँ से आया और आज किस स्केल पे है ये कंपनी? Cool. There was not one crazy insight which led to it. My again not some accidental but very thoughtful approach. My idea is that since customer is the king, and if they want red, you can't serve blue. So it doesn't make sense to be creative in problems. Problems should come from the market. Solutions में आप creativity explore करें अपनी. So I thought was कि I really loved working with marketeers, smart, creative people. So I thought let's solve a problem for marketeers. So I spoke to I think 350, 400 plus marketeers, and I thought कि let's figure out what we can do for them. So community was like a trend in those days. So a lot of people were talking about community. So I was like, ठीक है, let's try to make community engagement easier for these people. So with that insight, we
first we build a WhatsApp chatbot. Idea was to test the hypothesis. If it works out, then we'll build a full product. So that MVP got good results. We got 600 plus users within a month or two of launch, and then we went to Eureka, which we eventually won. So वहाँ से we also got funding for that prototype, but it was still an thought experiment. But because pitch was convincing, because last 5 साल से ही करा था, so investors got interested, they invested. तो उसके बाद फिर we got our first paid pilot in April after we got the funding. अच्छा. So it was a very lucky moment, I say. But when we tried to monetize it, we were not able to. Our first customer was paying us 5,000, next one was paying us 10,000. बट प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर्स आ रहे थे और अगले महीने छोड़ के चले जा रहे थे. प्रोडक्ट बहुत बगी था और यूज़ केस उतना अच्छा नहीं था कि उनको अच्छी वैल्यू लगे. ज़्यादातर यूज़र्स जो हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट था जो प्रोटोटाइप था उसको मांग रहे थे कि ये जो प्रोटोटाइप आपका था सेम चाहिए, बस इसमें ये ट्विक्स करके दे दो. तो वहाँ से भी रियलाइज़ कि बाकी चैनल्स की वजह से हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट वट एवर न्यू फीचर वी आर ब्रिंगिंग अप इज कंपैटिबल विद Telegram as well, Discord as well. So instead of building an omni channel, let's focus on WhatsApp, which is getting us the most customers. तो प्रोडक्ट वहाँ पे डिसमेंटल किया, फिर WhatsApp पे फोकस किया, चैटबॉट बिल्डर्स वगैरह. इवेंचुअली वी रियलाइज कि चैटबॉट बिल्डर इज़ नाइस, बट मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग साइड, WhatsApp ब्रॉडकास्टिंग, और वहाँ पे ज़्यादा पैसा है. तो वी स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट पार्ट. दूसरा प्रॉब्लम ये आता था कि बिकॉज वी वर वेरी न्यू एंड अपेरेंटली वेरी यंग एज वेल, so bigger brands didn't used to trust us. छोटे brands का problem क्या है? They don't have capacity to pay, so intent to pay is also significantly lesser. And my idea was always clear कि जिसके पास पैसे नहीं उससे पैसा कमा नहीं सकते, तो इनको सर्व करने का फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. They need more education, more hand holding, so I am spending more on OPEX, और पैसे लोग देना नहीं चाहते. तो we were keen कि बड़े स्टार्टअप्स के साथ ही काम करेंगे. So we got our first break in October when we onboarded Masai School. And this was the time when you were still a college student? No, I had graduated in 2022. Achha. So I started this company 6 months after. Achha, okay. So during those 6 months I didn't did anything. Okay. I was like कि figuring out. हाँ, so my family wanted me to do something, but I was always like कि randomly for the sake of doing क्या करने हैं. I had already had enough savings. So I was like, let me figure out what can I do. So I went back to my hometown. That's why I found a lot of me in my hometown. Because I went broke a few times, but didn't have money to stay anywhere else. Fair, so I had to go back to my hometown. I was like, let me figure out what to do next. Because just working hard doesn't get you results. You can work hard on anything. It's very important कि आपका risk reward ratio सही जा रहा है. If I become the best entrepreneur, then I would be in the ranks of Elon Musk, Steve Jobs. If I become the best cricketer, I would be in the ranks of Virat Kohli वगैरह. तो अगर बेस्ट इंजीनियर बन के भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो रैंक है क्या, वो फ़ायदा क्या उसका. तो बोले कि इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में फिगर आउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, तो एक और शॉट देते हैं इस पर. तो बहुत सारे डिबेट्स में मैं फात हो जाए, 25 तक कुछ हो गया तो ठीक है, उसके बाद यू आर डूइंग UPSC. तो अब तो 25 के हो गए हो. नाउ योर फादर एंड फैमिली दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू. Now they know कि बच्चा settle हो गया. हाँ, correct. So now let's talk about the current state of your organization. What's your current model? What's the product? And how have you figured out कि मुझे कौन से product को कितना scale करना है, कितना नहीं scale करना है? Again, what are those industry insights? Cool. So first industry insight is who we want to serve. So in our case, it's very clear. We want to serve startups between C to Series B in edtech and fintech spaces. Product is horizontal. We have customers from other parts as well, but these two are our focus areas. इसके अलावा the product we try to sell is, the reason most of the businesses switch from established players to us is because we have the capacity to scale very large scale campaigns very smoothly, effortlessly. Something which other players can't do because their architecture is one campaign at a time basis. Our architecture as we have built so far is where you can run like 1200 plus 1500 plus campaigns at once. So you can have like very large scale audience you can reach in a very small time. So instead of making the cast, it's a DIY product. Like अगर किसी को तुम्हें pitch देनी हो कि Seri क्या है, let's assume I am your new client, how will you pitch it to me? You can scale your WhatsApp marketing efforts very easily with Seri without even, a pitch to customers is you can increase your revenue by 60% without lifting a finger.
And that's because the interface we have built with Siri is you don't need to learn how to use Siri. You just tell it what you want and it does it for you. That's it. So Okay. And so when you say कि edtech and fintech are most of your clients, तो अब ये जो है इनको, how many of these clients are your repeat clients? Like what's the business model? retention is I think more than 98%. Okay. Business model is there are two models: subscription plus usage. Subscription initially was the only model, but then we realized people don't want. So it is like Gupshup. So you are a actual competitor to Gupshup. Direct competitor. So direct competitor. So now, why would someone not go to Gupshup, which is a very large, known, trusted brand? I think works with lakhs of customers. Why will they come to you? Okay, so in the segment which we talked about at C2 Series B, Gupshup has a lot of clients. They do I think $200 to $400 million in revenue. So for them, these clients who are into C2 Series B stage are negligible. So their customer support is pathetic. So is with a lot of other players in the industry. So even before we had a better product, we gained a lot of customers just because we had a better customer support, and we made up for the lack of good features with the team which we had. So in fact, the first hire we made after the core team wasn't a sales guy, it was a customer success guy, because we realized that a lot of people, I mean, communication is a necessity for business, and people don't want to get hanged on it because a technical team of the product they are using is not responsive or there are other problems. So we were like, hey, anyways, we don't have money to spend on marketing, so word of mouth can work for us. So that's why we had a customer success guy. तो ये कहीं जैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बोला, एंड मोस्टली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से व्हेन आई वाज इन एयरटेल एंड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई एम डूइंग, वी वर डूइंग, द आइडिया वाज सर्व टू सेल, व्हिच इज आप सर्विस करो, सेल्स अपने आप हो जाएगी. करेक्ट. ठीक है ना. सेल के पीछे भागने जाओगे तो सेल नहीं होगी. सो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम कहीं किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर में काम करके आए हो, तुमने MBA नहीं किया है, तो ये पढ़ के आया, देख के आया कि यार मैं वर्ड ऑफ माउथ सर्विस अच्छी दे दूंगा तो धंधा बन जाएगा. ये कहाँ से सीखा है? ये there might be a lot of places where I might have indirectly inferred it. But my first instances was when I was working with small stage startups. My first customers were my friends who were running startups. Fair. And we lost our first 3 customers for no fault of ours. One of them went bankrupt, and then one pivoted to something else. और उस तरह से. So like यहाँ तो कोई गलती थी नहीं हमारी. But after a thought I realized कि गलती थी. हम लोग कस्टमर सपोर्ट कर रहे थे. वो लोग प्रॉब्लम लेके आते तो हम सॉल्व करते. But in lot of cases, if I give you a camera, you don't become a photographer. I need to train you to be a better photographer. Only then you'll continue to buy my cameras. Otherwise आप पहला कैमरा लेके चले जाओगे. So that's when I realized कि कस्टमर सपोर्ट से कस्टमर सक्सेस पे शिफ्ट करते हैं, where we actively monitor their campaigns, we actively reach out to them, take their feedback, what's working, what's not working, and we made it a point that for initial first few customers, only me and my co-founders were the customer success representatives, not anyone else. Fair. Even till now, my biggest customers are handled by my CPO. So the way it helps us is most of the new technology or new innovative features we have launched, which are helping us to scale, I had no idea of them. So my co-founder was talking to customers complain कर रहे हैं कि ये problems आ रही हैं, and since he's also building the product, customer insights are directly translated to product features. No, it's like you said, everyone, the best product manager is not the manager who sits in your company. The best product manager is your customer. वो तुम्हें बताएगा कि क्या चाहिए. Correct. Yeah. So great. So अभी कितने रेवेन्यू स्केल पे, कितने कस्टमर्स हैं तुम्हारे? Like at what scale are you? अभी we have 100+ customers. Okay. We did last month 45 lakhs of revenue with them. Okay. We are, as you can see, averaging like 45,000 per customer. Yeah. Which is significantly better than what our other players in the business do. Okay. For example, there are companies like Interact backed by Jio. Airtel is also in the same business. So I once spoke to vice president of one of these companies, and I very frankly asked him, because I know पता तो उनको भी होगा कि आप लोग कस्टमर सक्सेस अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं. आपकी वजह से हमारा बिजनेस बन रहा है. अदरवाइज वो बेटर प्रोडक्ट.
So he said कि यार हमारा जो एवरेज टिकट साइज है पर कस्टमर हम पर मंथ 2,000 रुपये कमाते हैं. Hmm. आई कांट सेट अप अ कॉल सेंटर इन दैट. Hmm. सो दैट गिव मी सम वैलिडेशन कि हम बड़े कस्टमर्स के पीछे जब जा रहे हैं, छोटों को इग्नोर कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली गुड फॉर अस. Hmm. Since we are focusing on a larger customer segment, we are able to pay a team well. We are able to pay customer success representatives better. Hmm. So my current customer success team is second-time student founders. Hmm. A lot of us team is second-time student founders. अच्छा. People who have tried something, failed, they still have the Zeal to. prove themselves. And all of these people are like, we have conversations. They tell me these were the problems. That's how we solve them. Sometimes there's a major bottleneck which they need my help to solve. Otherwise, they take care of everything by themselves. Fair. So that's why customers के बहुत सारे problems ऐसे होते हैं जो they are not supposed to solve क्योंकि उनके JD में नहीं है. But they never thought about JD. So उन्होंने corporate में काम किया ही नहीं है कि उनको पता हो कि JD के हिसाब से करना होता है. These are problem solvers. So problem आती है वो solve करते रहते हैं. So customers are happy. इसी तरह से पूरी टीम का स्ट्रक्चर वही बनाया हुआ है. हर टीम में सेकंड टाइम फाउंडर्स हैं who are themselves solving all the problems. तो अभी तुम्हारी कंपनी में कुछ 12 लोग हैं, 10-12 लोग हैं. इसमें से 8 सेकंड टाइम स्टूडेंट फाउंडर्स होंगे. वाओ, ये तो यार बहुत बढ़िया बात है. इनके साथ एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए कि यार देयर विल बी बंच ऑफ एनर्जेटिक पीपल. Yes. वेरी गुड यार, वेरी गुड. एंड वेयर डिड यू फाइंड ऑल दिस गाइस? Friends, as I said, I still network like crazy. So like last week I was in Mumbai when Smriti reached out to me. Next week I'm again going to Mumbai. So whenever I'm in a new city, I try to ensure that I'm meeting as many people as I can. Or given my age, I hang out a lot with younger folks as well. So there are a lot of founders who reach out to me on LinkedIn as well. कि भाई हम लोग ये try कर रहे हैं. तो I'm happy to share whatever I can. फिर बाद में उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम सबका होता है. Then they are looking for something like ठीक है आप अगर हमारे पास है तो साथ में काम कर लो. तो अभी आर यू रनिंग योर कंपनी प्रॉफिटेबली? Yes, it's profitable. It's profitable. And the last round which you raised funding का जो इस न्यू अवतार ऑफ सेरी में, उसके बारे में बात करते हैं. How was the funding round? What did you do? What was the raise? What was the valuation? So we raised around $125K US. Our idea was to build the product, and another idea was to make it profitable as soon as possible. Yeah. Because I had this, wild kind of a phobia that my investors will kick me out. Maybe because I read too much about Steve Jobs and Uber वगैरह. So I was very clear कि the only way I can protect myself from being kicked out is not by holding equity or whatever. It's by building a strong business and by becoming a good CEO. That if they kick me out, business would suffer. So I was like कि if we are profitable, then we don't need to depend on anyone else. Fair. So it was the idea all along that we need to find the quickest way to get profitable faster. That's why I'm always inclined towards B2B models. और वही आइडिया था कि प्रॉफिटेबल करना है और कैश फ्लो पॉजिटिव करना है क्योंकि क्रेडिट साइकिल्स लंबे होंगे तो फिर से सैलरीज वगैरह देने में प्रॉब्लम होगी जो कि हमें काफ़ी टाइम तक हुई. अभी भी कैश फ्लो की वजह से हम लोग उतना स्केल अचीव नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था क्योंकि बड़े कस्टमर्स हैं. दे द गपशप एंड बिगर प्लेयर्स गिव देम वेरी easy credit cycles like 60 days 90 days. We can't afford that. तो वहाँ पे हम लोग 10 में से 6 कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे इसलिए लूज कर देते हैं बिकॉज वी कांट कम्पीट विद गपशप ऑन क्रेडिट साइकिल्स. तो वही आइडिया था कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी. तो विथ वेरी डे वन वी आर वेरी क्लियर की छोटी टीम रखनी है, अच्छी टीम रखनी है और एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं. डोंट स्पेंड ऑन एनीथिंग विच इज़ अननेसेसरी एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग विच इज़ नेसेसरी. अगर 30,000 में कोई बंदा मिल रहा है और 45 में उससे 30 में गुड मिल रहा है, 45 में ग्रेट मिल रहा है तो 15,000 खर्च कर देते हैं. लॉन्ग रन में काम आ जाता है. तो दैट वाज द वे टू बिल्ड. सो एंड हु वाज योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन दिस राउंड? It was led by Anderson India Capital. They are Japanese investors. They saw us in the Eureka. Okay. So we won. So वहाँ पर they were sponsors, gold sponsor or something. So they get I think direct access to pitch, and from there they reached out to me. Okay, we saw your pitch, we liked it. Are you open to investments? And we were open to investments. However, we haven't thought of raising capital, but we were like पैसे तो लगेंगे क्योंकि है नहीं हमारे पास. So that's how we raised. During same time we were also in discussions with D Labs, but उस टाइम पे उनके पास ये SFSF के funds थे नहीं. So that actually happened later. I think 8 to 9 months later when they got a fresh set of SFSF funds.
So we discussed with them. So they invested 25 lakhs. So that's when the complete round was Round one. completed. Fair, fair. And what are the priorities for the next, let's say, 12 months for you? So there are two things which I'm very keen on. First is apart from WhatsApp, we want to diversify. So there are two areas we want to diversify in the product sense. First is voice. Another one is we are trying to be a publisher. So with WhatsApp, we have the entire engagement from if you have captured the lead till the part we are providing support, वगैरह वगैरह. Now another channel which is most commonly used in India is voice. So I've been keeping an eye on the voice for last 11-12 months. What I observed was globally you're charging for an AI voice call around 35 rupees per month or per minute. In India, there are a lot of startups which are doing it at 5 to 7 rupees. Yeah. But even at that price point, it's not economical. For example, a typical telecaller averages around 4 to 5,000 minutes a month. Yeah. और ऐसे नहीं कि आप ये लगा के रात को 2:30 बजे लोगों को कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग पीरियड उतना ही है. तो इन 5,000 मिनट्स के लिए अगर आपको 5 रुपये के हिसाब से एक कॉल रिप्लेस करना पड़े, इट्स कॉस्टिंग 25,000. और इंडिया में हमारा मिनिमम लेबर वेज कुछ है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है. आपको 12,000 में भी टेलीकॉलर मिल जा रहा है, तो आप 25,000 क्यों देंगे उसके लिए? तो वहाँ पे ये स्केलेबल नहीं है. सो वी वर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंटरनली एज वेल टू फिगर आउट व्हाट वी कैन डू. And we figured out something which can reduce this cost to 1.5 rupees per minute. So at that level, even if we charge what current market rates are, or even if we charge let's say just 3 rupees, 3 रुपये पे वो 15,000 आ रहा है. तो वहाँ पे we can at least pitch it to the customers to find a replacement. Correct. And eventually as technology grows, as you know, technology in the sense gets cheaper with time. Fair. So within I think 12 to 18 months, it will come down even. It will even come down more. तो वहाँ पे will have a very strong proposition. Plus बाहर की कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लेबर लॉस है वगैरह हैं, तो वहाँ पे you are anyways paying 40-50,000 to your call center guy. उसकी जगह if we can help you do the same thing in 20 to 25,000, तो we have a good market over there. Fair. So voice is what we are working on right now, planning to launch it full-fledgedly next 1 or 2 quarters. अभी हम लोग बस APIs है कि कुछ कस्टमर के साथ टेस्टिंग करें कि स्केल पे कॉस्ट फ्लक्चुएट ना करे ज़्यादा. अनदर थिंग इज़ ऑन द साइड ऑफ गेटिंग आवर ओन फर्स्ट पार्टी डेटा सो दैट वी कैन बिकम अ पब्लिशर आवरसेल्व्स. अभी अगर हम CPaaS मॉडल पर रहते हैं तो द बेस्ट वी कैन गो टू इज़ मे बी लेवल वेयर गपशप इज़ राइट नाउ आफ्टर 30 years. $200-400 मिलियन का रेवेन्यू होगा, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन होगी. दिस द बेस्ट वी कैन डू, आई मीन आफ्टर पुटिंग ऑल द हार्ड वर्क. But if we can get to the side of advertising, all of our customers are sharing us leads which come from somewhere. What if we become the source of those leads? If we get into advertising, if we become an advertiser or a publisher, then we would be like comparable with Google Meta. तो वहाँ पे valuation multiples could be high. It could be a chance to build a $1 trillion company. At our scale, as of now, we help our customers reach 50 million or 75 million users every month. We can do the same for ourselves as well if we have enough capital. And with that, within a year or 2 years, we can get to a qualified user base of 1 billion or more than that. मेटा के पास भी टोटल मिला के 2.5-3 बिलियन यूजर्स ही हैं, तो अगर 1 बिलियन भी आ गया तो we have a chance at or a shot at becoming a advertiser or publisher. Fair. So who are your main customers, clients? As in names or names, industries, countries, कहाँ से हैं, क्या है? Most of them are from Indian Middle East. Okay. Primarily from India. और यहाँ से भी primarily in tech and fintech. इसके अलावा there are customers from real estate, travel, healthcare, because communication is something which everybody needs. It's just that we focus on tech and fintech for our own selfish interest. सेल्स टीम के लिए ईजी रहता है, दिन में 10 एडटेक से बात करेंगे तो एडटेक्स के प्रॉब्लम्स उनको रट गए, उनको अब किसी को सेल्स करते हैं वो एज अ कंसल्टेटिव सेल्स करते हैं कि आप शायद ये करते होंगे, ये आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा होगा, आप ये ट्राई करके देखिए, दिस कुड वर्कआउट. दिन में 10 अलग कस्टमर से बात करेंगे तो 10 नई चीज़ें सीखेंगे जिसमें एवेंचुअली सीख कुछ भी नहीं पा रहे हैं. Fair. No, very good यार. And what do you fear? Do you think with the change of AI, and as you said you have aspirations to get into voice or being a publisher, what do you see your future, let's say, or what is the good future for you as an organization? Someone comes and buying you up, maybe why not Gupshup
कमिंग कि यार तुमने बना लिया अपना, दे माइट बी सीइंग यू Hmm. एज वन ऑफ द क्लोज कॉम्पिटिटर कि यार ये कर रहे हैं इन्होंने, जब एक वैल्यू पे आ जाएंगे इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, हम ही खरीद लेंगे इनको, इतना पैसा दे देंगे, इतनी वैल्यू दे देंगे, अच्छा रोल दे देंगे. डज दैट एक्साइट यू? Not particularly. But isn't that not a great outcome coming from, you know, such a humble background? That would, I mean, I'm neither for it or against it. When it happens, उस टाइम पे जो context है, what I think about business, market, lot of other things, उसके हिसाब से I'll take a call कि ये अच्छा decision है कि खराब है. Fair. अभी I can't say ऐसा कब नहीं होगा. ठीक है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे. ग्रेट यार. साथ अब ये बताओ कि अब कोई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हो या कॉलेज में हो, इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब एआई इतना बढ़ रहा है, शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही हैं, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द यंग स्टूडेंट्स कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो कैसे फिगर आउट करना चाहिए कि इज़ दिस अ पाथ फॉर मी? जैसे तुमने बहुत ही सिस्टमैटिकली अपनी जर्नी चूज़ की. बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे बच्चों से या स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे और उससे एंटरप्रेन्योर बन गए, या उनको कुछ पैशन था उससे एंटरप्रेन्योर बन गए. तुमने तो थॉटफुली करियर चूज किया एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? I have very limited experience to guide someone else, but what I would say is being thoughtful always works. A lot of advice we found on internet or from our mentors, advisors as well, they have very limited context on. It's like आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट में कितना एक्सप्लेन कर दोगे, तो अपने मेंटोर को भी कितना एक्सप्लेन कर दोगे. सो हाउ यू शुड थिंक अबाउट योर लाइफ इज टोटली अप टू यू. यू नो योर सेल्फ द बेस्ट. आपको खुद से झूठ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ विदाउट फिल्टर्स. थिंक अबाउट things which matter to you. What are the prime? Why do you want to become an entrepreneur? For me, the answer was very clear. I want freedom. I want to live and let other people live. I didn't want that power or anything else. So that for me it was very clear that entrepreneurship I can get it if I think through it. So be very thoughtful about what you want, why you want, and then figure out how you can get over there. Being thoughtful helps you solve for a lot of challenges which you might see. And apart from the several other qualities which you need to have, hardworking hona padega, you have to be smart enough, kind enough I guess as well, because when you're kind, you get a lot of opportunities which you might not have gotten with hard work or by being smart. So a lot of things which you can do, but always be very thoughtful and use advisors and mentors as someone to see if you have any blind spots in your own thought processes, or they might have made the same mistakes. क्योंकि इट डजेंट मीन्स दैट कि आप थॉटफुल हैं तो आप सही डिसीजन पे आ रहे हैं. आप बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं. कुछ गलतियां तो कर देनी चाहिए क्योंकि बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते गलती करना, और कुछ गलतियां होती हैं जो मे बी आप बिना करे भी सीख सकते हो. सो हैव अ नेट ऑफ और अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली और एनी वन एल्स. डोंट फॉलो एनी रूल्स, स्पेशली इफ यू आर स्मार्ट. इफ यू आर स्मार्ट, आई थिंक यू शुड क्वेश्चन ईच एंड एवरी रूल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूल्स आर फॉर पीपल हु आर स्टूपिड, so that they don't make mistakes. If you are smart, don't think about what others say. Think for yourself. क्या आपके लिए सही है. फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ट्राई करें, फंडामेंटली सोचें. सही लगता है तो कर दें, नहीं लगता तो ना करें. मतलब डोंट ओवर थिंक. No, very good, yeah, very good. I think after a long time, I found a young student entrepreneur like yourself who has his own frameworks or thought process, and you are questioning the status quo, not accepting as it is, which is a very good. क्या होता है लाइफ में आगे कंपनी का, that no one knows. Okay, but what definitely I think after talking to you, I am quite sure that you will figure it out. Yes. You will figure it out. ये नहीं चल रहा होगा तो कुछ और चल जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा. आई थिंक ग्रेट यार, ग्रेट टू हैव यू हियर साद. You know, it's always a pleasure to meet young entrepreneur, young student entrepreneur, young student passionate entrepreneur, because it's not a story about himself. It's not a story about his 12 colleagues. It's a story from where we can take so many learnings for, you know what, we have I think 4 crore students currently studying in higher graduation. 4 करोड़ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 4 बच्चे भी इंस्पायर हो गए ना, सो आई थिंक 40 minutes of our this time is worth it. With that note, I would want all of you to share this story, love this story, like this story, and you want
the communication channel, reach out to Saad for more business. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Great Thank talking you. to you.